And in response, the BJP minced no words. कानून केवल बीजेपी के लिए है और लोकतंत्र बाकी लोगों के लिए। जो युवा आवाज उठाता है उसका राजनीतिक हत्या कर दी जाती है। बंगाल आज सिद्ध हो गया है कि ममता बिल्कुल पूरी तरीके से घबरा गई है। Mamta, being Mamta, chose to ignore, but not for long, because come November, BJP had unleashed the party's Chanakya. If you have to dethrone Mamta, the BJP knows there's only one man who can do it. Enter Amit Shah. The first visit in early November was a relatively low-key one. A few cultural events garnered a lot of attention, but there's no way he was leaving Bengal without a few pot shots. जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है। जब वो भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते थे, तो हमारे स्वागत के लिए कम थे, ममता जी पर गुस्से के कारण ज्यादा दिखाई पड़ते थे। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकते। Well, now there is no way Mamta was going to be silent, but uncharacteristically, she was subtle in her response. লোকাল পুলিশকে বাদ দিয়ে সিআরপিএফ কে নিয়ে এসে একদিকে হোম মিনিস্টার চলে গেছে বাঁকুড়ায় নিমন্ত্রণ খেতে, অন্যদিকে পাশাপাশি 3টে জেলায় প্রয়োগ চলেছে। দিল্লির সরকার আলুর সরকার, সব আলু নিয়ে চলে যাবে, আপনারা আলু সেদ্ধ ভাতও আর খেতে পারবেন না। এই আইন দিল্লি তৈরি করেছে, এদের আর একটি ভোটও নয়, এটা মাথায় রাখবেন। The fireworks were yet to explode. BJP had given Mamta a wake-up call. But what happened next changed the course of an already volatile election build-up. As you can make out, the storyline now had gotten personal. If the killings of party workers had grabbed eyeballs, attacking BJP President JP Nadda's convoy made this an all-out personal war. ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लॉलेसनेस है, और लॉलेसनेस के साथ साथ पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ वायलेंस है, और विकास के खिलाफ परिस्थितियों को पैदा करना यहाँ ममता जी की आदत है। यहाँ भी इस दमनकारी नीति को हम उखाड़ फेंकेंगे। Nadda there going all out. Unsurprisingly, Didi remained defiant on the attack all through. বাংলার ইলেকশন হিম্মত থেকে বাংলা দিয়ে করুন। বাংলার ইলেকশনের বাইরের গুন্ডা কেন আসবে? বহিরাগত গুন্ডাদের আটকান, বাংলাকে বাঁচান, এটা আপনাদের কাছে আমার আবেদন থাকবে। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবার কেউ করে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে, তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায়, দেখো আমরাই মেরেছি। আরে তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়? Let's put this straight. Mamta's fearless, and not often do you see her really shaken. Even as she was fighting this lone battle against all of BJP's heavyweights, but the frustration was there to be seen, especially with rumors of dissent within her party. And perhaps this was BJP's turn to make their move. Amit Shah was back in Kolkata, and this time it was all political. The Home Minister was in Midnapur, and along with him was a familiar face, although never seen before, in saffron colors. In what came as a huge blow to the TMC, Shuvendu Adhikari, Mamta's closest lieutenant, her right-hand man, traded sides, chose to wear saffron and was ready for a face-off. আমি ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এই জায়গায় এসেছি, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এসেছি। আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছে, কে বলছে?
প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টি হবে সরকার তৈরি করবে Shubhendu, as you can see, very animated in that rally. But that wasn't the only headline from that event. Make note of what Amit Shah said. अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। And Amit Shah was right. More leaders opted against Mamta's leadership, and dissent within the Trinamool Congress was out in the open. ममता जी, आप चिंता मत करिए, आपके खिलाफ बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे, वो ही आपको हराएंगे। Didi though was in no mood to give up. She's known to be a fine orator, and she really let loose in a series of attacks at the BJP hierarchy. They don't like me. Instead of liking me, they hate me. নরেন্দ্র মোদী সরকার কোনো গণতন্ত্র মানছেন না। Politics of the BJP leaders is, for politics they can do anything. They can say anything. And they can say all the garbage of lies. আর আজকে সারা বাংলা ঝকঝক চকচক করছে, দেখেও বুঝি ঈর্ষা কাতর হয়ে এইসব কথাগুলো বলছেন। সত্যি কথা বলুন, আমার কোনো আপত্তি নেই। সত্যি কথা না বললে কিন্তু প্রত্যেকটা কথাই চ্যালেঞ্জ হবে। Now you must be wondering, where is Prime Minister Modi in all of this? सारा देश जानता है, और ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था। And that was just a teaser. It was a response to Mamta, who was protesting against the contentious farm laws. But there was something much bigger in store, and it was just about timing. The 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, and the Prime Minister makes his first visit to Bengal ahead of the elections. Modi and Mamta stood at arm's distance, and the deafening silence between the two showed clearly that there was no love that was lost. It was a short stint meant to be a cultural government event to celebrate one of India's iconic freedom fighters. But one that turned very bitter for Mamta. नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। जय हिंद, जय बांग्ला। Days later, the TMC responded with yet another headline statement. राम किसको पूजा किया था? दुर्गा पूजा किया था। हम दुर्गा पूजा करते हैं। I am also Hindu. I will not take certificate from BJP that I am Hindu A or I am Hindu B. You compare. If you can catch me, sit, discuss. I will give you the what is Hinduism, and you realize me. So the question now, what next? What is the next chapter? Does the poll battle get more volatile? Does the BJP have any more ammunition? Is Mamta running out of steam? So we'll get our answers come May. But for now, all we can say and all we know is that Bengal is heading for an epic two-horse battle. Yes, the left and Congress might dent a few chances. The AIMIM too, interestingly, is throwing their hat in the ring. But this battle for the throne comes down to this: the BJP versus the TMC. The autumn was calm. During winter, the exchanges got a bit heated. The spring sees both parties really put the foot on the pedal. And come summer 2021, the sun will once again rise and there'll be a new dawn. But on whom will the light shine brighter? Watch this space. There's more than really what meets the eye in Bengal. And cut. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.